judges that includes Dr. Malka Sabah, Dr. Ghazala, Dr. Mohammad Zafar. He is also a biodiversity specialist, and Professor Dr. Tariq. We have questions. What is the role of the female students get a degree in botany, environmental sciences and the biological diversity? How they were the female communities in Pakistan to protect the biodiversity? So what is the role of female? As a female, we know that in old times females used to go to the farm, and as a farmer they have also worked there. But now as an educated person we can go in different institutes, in government institutes, where we can conserve, we can do the work for the conservation of the plants and as well as different species. And as a female, we should educate our future generation, the children of us, and teach them how to conserve the plants. And we should teach them that which plant is important for us in our food and conservation, and which plant is exotic and which is not our native. Thank you so much. और इसके अलावा हमने फॉरेस्ट फायर्स में प्रेजेंट किया, जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में फायर्स नेचुरल कॉजेज की वजह से भी होती है और ह्यूमन कॉजेज की वजह से भी। We have another very enthusiastic and active student, and she is a GR of BS Botany, Ram. Ram, what is the theme of this day and what is the role of the botany student, the natural lovers, the environment lovers on this day, the environment day and the biodiversity? Sir, our role is that we should promote more planting, more conservation of biodiversity. We should use conservative ways to protect our environment. Like we should be good shoppers. Like we should not use polythene bags. Instead, we should use cotton bags, paper bags. And these are threats towards biodiversity, such as agriculture extension, over-exploitation and hunting. So, RAM message is basically for environmentalists, for nature lovers and for layman communities that you use the eco-friendly shopping bags, you overcome the biological diversity threats to start the awareness among the communities for the restoration of the ecosystem, restoration of the environment. So biodiversity is a waste, so don't let it. Yeah. So another important, she discussed that the biodiversity is our life, so we protect the biodiversity in order to protect our life. जब लीव्स नहीं जाएंगे या फिर वो सनलाइट डायरेक्टली एक्सपोज होगी, उसके बाद जो हमारा वो 12 लाख की लॉस है सोलर पावर के लिए टरबाइन है खुद से विंड एनर्जी क्रिएट होगी. On this day we are basically celebrating 2 days. First one is the Biodiversity and Conservation Day, and the theme of this year is building a shared future for all lives. And on Environment Day, the theme of the environment is one earth for all species. So we have a BS student of NAN. He is a core student of BS Biodiversity and Conservation. He will express the views about this day and the models and the posters presented by different students. So biodiversity is different variety of biology, and on this day many posters were made. The theme of many posters were biodiversity as well as ecosystem was also explained, because recently we had the ecosystem day. So the theme of this year biodiversity is building a shared future for all living life, and that is what we are expressing in all of the posters. So what is the role of botany students to aware the conservation of the biodiversity environment? I think more of the event should be informed to all of the students of all the other departments. We have promoted this event. All of the students of other departments were allowed to enter and look at these posters, so they can learn a lot. We can have seminars, webinars and other events for all of the students of our university. Thank you so much. Be responsible for better world, work together to sustain biodiversity. Don't harm biodiversity, because our existence depends on the existence of nature. Preserve biodiversity, preserve nature, preserve your life. बेसिकली हमने जो मदर अर्थ को डेमोन्स्ट्रेट किया है कि हमारा होमलैंड जो है वो अर्थ है, और हम जो है जेनेटिक एक्टिविटीज़ की वजह से जो है वो अर्थ को हार्म कर रहे हैं. जैसे डैम्स की अनवाइज कंस्ट्रक्शन की वजह से जो वाटर का नेचुरल फ्लो है वो अफेक्ट हो रहा है, जैसे जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है वो डिस्टर्ब होता है. इसी तरह से हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, डिफॉरेस्टेशन जैसे हैबिटेट लॉस हो रहा है, उसकी हम वाटर
की जो है वो पोल्यूशन कर रहे हैं, सीज के अंदर ऑयल स्पिल्स और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं हमारी एक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो साइबेरियन बर्ड्स हैं उनकी माइग्रेशन पर भी असर आ रहा है, यानी जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं वो भी अफेक्ट हो रहे हैं और इस तरह की सारी Another important students, Shoaib Juma, he is also belong to a very important area from Balochistan. So he will share the experience of Balochistan with us, how to protect the biodiversity, how to protect the environment. Sir, according to the awareness of this Biodiversity International Day, today we become aware about this International Day, and I searched about Angul National Park of Balochistan, which is second largest national park in Pakistan according to the area. Some endangered species which are present in there, but still there isn't any conserving system in Angul National Park. Yeah, Shoaib, let us know about that. Angul is the second largest national park. What is the role of national park for protecting the biodiversity? Because in Pakistan the communities are unaware about the national park, because everyone know the park that is where we go to for picnic, but the national parks are the actual parks that play important role for conservation of biodiversity. So what is your message about the Pakistani communities to develop national parks? Sir, my suggestion is there for international means national park. It means for this is the best awareness for Baloch people to conserve their environment and their endangered species. Due to less rainfall, there isn't any plants and animals are existing. But this is Angul river, which means fast into Angul National Park. Suddenly, these are the animals which drink this water near coastal highway. Coastal highway is present, but unfortunately the water of the river is so salty they cannot drink this water. Thank you so much. We have also a very active student from very important area of Waziristan. Waziristan is also one of the important area with respect to the trans biodiversity, that is near to the Afghanistan. So we are enjoying the transitional zone between Pakistan and Afghanistan, and Waziristan is the only area where there is a rich diversity of the Pinus gerardiana as well. So Azratullah is with us. He is belonging to Waziristan and will highlight about the biodiversity of Waziristan and what the role of this student especially to Waziristan to conserve the biodiversity environment. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने इस पोस्टर के थ्रू बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन किया है कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। इस पोस्टर में हम देख सकते हैं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइफ है। फॉर एग्जांपल इसमें एनिमल्स है, प्लांट्स है, एक्वेटिक एनिमल्स है, फंजाई भी है, बैक्टीरिया वगैरह, तो ये सब मिल के एक बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं और सब मिल के ये काम करते हैं। तो ये एक हमारे लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए अच्छा है। तो बाकी वजीरिस्तान में इतना प्लांट्स के रिलेटेड इल्म नहीं है, हालांकि वहाँ के जो लैंड है वो बहुत फर्टाइल है, वहाँ पे बहुत डिफरेंट काइंड्स के स्पीशीज ग्रो हो सकते हैं। इसका एक जिंदा मिसाल है कि कीवी का जो फ्रूट है ना, वो रिसेंटली वजीरिस्तान में ग्रो हुआ है और बहुत मतलब ज़्यादा लेवल पे वो प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा अज़ीज़ुल्लाह, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है पिछले 2-3 सालों में कि वजीरिस्तान में कुछ ऐसे प्लांट जो आपने माइट भी स्कूल के बाद देखे हो लेकिन अब आपको नज़र नहीं आते, कोई एनिमल जानवर, तो उसमें क्या गवर्नमेंट का रोल प्ले कर रही है और आप एज ए पढ़े लिखे बॉटनिस्ट वहाँ जाके कम्युनिटी में आपका क्या रोल होगा? जी सर, बिल्कुल। वजीरिस्तान में पहले सर चिलगुज़े के बहाव बहुत ज़्यादा थे सर, वो बाहर मुल्कों को भी एक्सपोर्ट हो रहे थे, बहुत ज़्यादा थे, मतलब मुल्क का ज़्यादातर इकानमी का जो लेवल था वो इन पर डिपेंडेंट था। लेकिन रिसेंटली वो उन जंगलात में बहुत ज़्यादा फायर वर्क्स हो रहे हैं, तो उनके वो जो है वो क्रॉप्स कम हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उनकी तरफ खास तवज्जो दे। We have another student, Arfeen Zahra, who made this poster. And what's your theme, Arfeen? सर ये है कि ये हमारे हाथ में है, ह्यूमन हेल्थ में है कि हम अर्थ को कैसे रखना चाहें। मतलब ये कि हम इस तरह भी अर्थ को रख सकते हैं और इस तरह भी अगर करना चाहें तो इस तरह भी हमारे हाथ में है। अगर हम प्लांट लगाएंगे तो जो हमारी एवापोरेशन और ये सारा सिस्टम होगा, तो हमारे जो ओशंस हैं वो नीट एंड क्लीन रहेंगे, तो उसमें जो ओशंस में एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, वो अच्छे से ग्रो कर सकेंगे। जो धुआं होता है तो हमारा एरिया उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो चुका है। सर जो हम प्लांट्स वहाँ पे ग्रो करवाना चाहते हैं तो वो उगते तो हैं, वो निकलते हैं, लेकिन वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ की जो लैंड है वो पोल्यूट हो चुकी है। According to Arfeen, she said that we have two options. If we make our environment green,
we basically make our life healthy. If we pollute the environment, to destroy the environment, our life is destroyed. We have a president of our PAC Society of Plant Sciences, Umair. What is your message from plant sciences towards the nature lover and the biodiversity and ecosystem? What are the activities that the PAC is going to perform for the society and the ecosystem and the community? फर्स्ट ऑफ ऑल जितना भी स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है हमारे प्लांट साइंसेज के और एनवायरमेंटल साइंसेज के कुछ स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है, उनके लिए उनका बहुत शुक्रिया। और हम ये इस तरह की बहुत सी एक्टिविटीज़ अरेंज करते हैं अपने डिपार्टमेंट और इवन यूनिवर्सिटी लेवल पे, ताकि जितना भी ये है बायोडाइवर्सिटी डे के अकॉर्डिंग हमने ये एक्टिविटी वो की है। बहुत से स्टूडेंट्स उसके प्रॉब्लम्स लेके आए हैं कि बायोडाइवर्सिटी को हम किस तरह से थ्रेट है, मीन्स कि होमो सैपियंस जो मेजर है वो किस तरह से बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट कर रहा है, और उसके साथ साथ वो उनकी रेमेडीज़ और उनके सॉल्यूशंस भी साथ लेके आए कि हम ये बताएं कि आपकी सोसाइटी क्या क्या कर रही है प्लांट साइंस के लिए और पूरी यूनिवर्सिटी के लिए। जी सर, सेम जिस तरह से आज हमने ये सेलिब्रेट किया है, इससे एक मैसेज है पूरी यूनिवर्सिटी के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए कि जो हम बायोडाइवर्सिटी को ये जो मेजर थ्रेट है ये कौन सी वजह से है और इनकी जो रेमेडीज़ हैं वो क्या है। जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं नेशनल लेवल पे, उनको हमारे लिए ये मैसेज है कि जिस तरह से आज ये हम देख रहे हैं बिल्कुल सामने जो ये फायर लगी है, इनकी जो रेमेडीज़ हैं वो अडॉप्ट करनी चाहिए, और जो हमारा जो भी मिनिस्ट्री है इसके रेलिवेंट वो उसको इन चीज़ों को हमने हाईलाइट किया ताकि वो इसका सोल्यूशन निकाल सके। और हम इसके अलावा बहुत सी और भी एक्टिविटीज़ अपने स्टूडेंट्स के लिए प्लेटफॉर्म देते हैं, जिस तरह से कोई ट्रिप हो गया, लाइक हम ट्रिप्स लेके जाते हैं और वहाँ पर कोई भी बायोडाइवर्सिटी हम उसको वहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं, कोई भी फंगल डाइवर्सिटी हम उनको एक्सप्लोर करने के लिए अपने स्टूडेंट्स को ये प्लेटफॉर्म देते हैं। Thank you so much. Amrez Khan, he will explain about the theme of this day and what is his role in community and ecosystem and biodiversity conservation. तो इन्वेजिव स्पीशीज़ वही होती है जो बाहर से आती है किसी इकोसिस्टम में या हैबिटेट में और उसी हैबिटेट में डिस्टर्बेंस काज करती है। ये इन्वेजिव स्पीशीज़ मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है, लेकिन ये वर्टिब्रेट भी हो सकती है, इनवर्टिब्रेट भी हो सकती है, इन्वेजिव प्लांट्स भी हो सकती है, इन्वेजिव वेजिटेटर्स भी हो सकती है, इस तरह फंजाई भी हो सकती है। Amrez, according to your theme that the invasive species are another important threats to the biodiversity, so it's our responsibility to avoid such type of invasive species, and what is your message for this day today? तो हमको मतलब डिफॉरेस्टेशन मतलब कम करनी चाहिए, और इसी तरह हमारे मुल्क में ज़्यादातर नॉलेज नहीं है, तो चाइना ने एक स्पीशीज दी थी पाकिस्तान को, मतलब अगर हमारे मुल्क को पता होता कि ये स्पीशीज खतरनाक है तो ये इन्वेजिव मतलब नहीं होगा। According to you that according to Amrez that we must avoid invasive species cultivation. We will focus on the indigenous species, native species of Pakistan, and they are more eco-friendly to this country. So it is the very important area as Amrez discussed about the invasiveness. So invasive is another important threat to the biodiversity. Thank you so much. Mycologist or fungal biologist Dr. Malka Sabah, she tell us about the fungal diversity of Pakistan and what is the role of fungi and how we can explore the fungal diversity in Pakistan. Some of the trees they necessarily need this association for their survival, and in our human beings we need the fungi for eating purposes, and we can use them to, as a food security purpose. So we can cultivate the fungi and we can use them from the edibility point of view. Another thing is that they are acting as a decomposers in our forest ecosystem, and they are decomposing the things, litter which is present in our forest ecosystem, which is necessary for the recycling purposes. And the last one is that they are also medicinally important, and we are using them in certain pharmaceutical industries to prepare certain medicines. So fungal diversity is very important to maintain a healthy ecosystem because they are playing several roles in our ecosystem, so it is important to conserve them. If we are not conserving them, we will face certain challenges in our climate as well as in our ecosystem. Thank you so much. सॉइल से जितने भी न्यूट्रिशन है वो प्लांटों को अवॉइड करना है। उससे क्या होगा कि प्लांट जो है हमारा हेल्दियर होगा, और जितना हेल्दियर प्लांट होगा उससे एक सिंथेटिक ब्रीथिंग इंक्रीज होगा, और इससे ये बाकी क्लाइमेट चेंज में देखना चाहिए। जैसे हम लोग ये पढ़ेंगे कि अब फंजाई जो है वो इंक्रीज करता है क्लाइमेट को या डिक्रीज करता है, तो हम ये कहेंगे कि फंजाई जो है वो हेल्पफुल होता है क्लाइमेट को डिक्रीज करने में, क्योंकि वो मेरा नाम अब्दुल सलाम है। आज
ये इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की मुनासबत से मैंने ये चार्ट बनाया है। इसका जो स्लोगन है वो कीप और वर्ल्ड कलरफुल प्रेजर्व बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अच्छा इस्लाम, आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं? मैं बलूचिस्तान से। अच्छा, बलूचिस्तान में आपने क्या पिछले 5-6 सालों में देखा है एनवायरनमेंट के लिहाज से, बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से, कि वहाँ पहले एनवायरनमेंट कैसे था, बायोडाइवर्सिटी कैसे थी, या आप एप्पल के बागात अब कम होना शुरू हुए, तो ये क्या क्लाइमेट की वजह से हुआ है, एनवायरनमेंट की वजह, तो आपके अपने क्या एक्सपीरियंस है बलूचिस्तान के? सर जो बलूचिस्तान के हवाले से जो है वो रैपिड जो क्लाइमेट चेंज है बायोडाइवर्सिटी में, और अभी रिसेंटली जो शेरानी में ये जल अच्छा वो भी जलकर जो खाकसर हो गया था। तो क्या रोल हो सकता है जब आप बॉटनी करके जाएं या एनवायरनमेंट में बीएस करके जाएं, तो आप क्या अपनी कम्युनिटी में क्या आपका मैसेज होगा? सर वो यही मैसेज होगा कि कीप और वर्ल्ड कलरफुल प्रिजर्व बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और इसके हवाले से और भी वहाँ हम सीनियर वगैरह करेंगे और यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें हम विज़िट करके तो अपना ये पैगाम उन तक पहुँचाएंगे। क्योंकि एज ए बॉटनी स्टूडेंट्स, बीएस बॉटनी स्टूडेंट्स स्पेशली, इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इनको प्लांट्स का पता है, दे नो अबाउट द प्लांट आइडेंटिफिकेशन, प्लांट्स की वैल्यूज़ क्या होती हैं, यूजेस क्या होती हैं, तो दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड हेल्दी रोल एंड एक्टिव रोल इन द कम्युनिटीज, हाउ टू प्रोटेक्ट द प्लांट बायोडाइवर्सिटी एंड हाउ टू प्रोटेक्ट our natural resources like Pinus, Girardiana, Chalgoza is a live example in Quaid-i-Azam. Thank you so much. Thank you, sir. So I looked at some of the posters and I was highly impressed with the models, the way they are, and they are really giving the view and the I can say intensity of the situation. Well done, students, and I think so you should be the future generation taking this course of fire. Thank you so much. थीम क्या था डॉक्टर साहब, ये बोलिए आपका थीम क्या था और आपका क्या आगे We mostly focused on ecosystem restoration, and in this model here we are discussing about the different types of ecosystems. So the World Environment Day, the theme of that was also ecosystem restoration. In this model we are explaining different types of ecosystem, which is the deserts, the aquatic life, the forest and the highlands. The glaciers is melting and the water is flowing into the river. So we explain different types of biodiversity in these types of ecosystems. Now Mustafa will speak about the ecosystem restoration, and how can we save the ecosystem. Ecosystem restoration is basically the different types of restoring their different fertilizers, different fertilizers, हमने ऐसे किया है कि क्वाइड-i-अज़म यूनिवर्सिटी के एरिया को हमने लिमिट कर दिया है कि यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी के कौन से प्लांट्स में कौन से स्पीशीज ज़्यादा है। प्लांट डाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी दोनों यहाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्लांट डाइवर्सिटी स्पीशीज में भी हम ट्राई टू मोस्टली सब फैमिलीज को कवर करें। हमने एक्चुअल नोट किया है कि लाइक ऑल्सो गुड एनिमल एनिमल डाइवर्सिटी को शो करेंगे। दिस इज व्हाट वी वांट क्वाइड-i-अज़म टू लुक लाइक क्लीन। Actually, you are focusing about the green and clean environment. Specifically, the Quaid-i-Azam University garden, and then you have to apply another areas of Pakistan. We have these species all across the Pakistan, but we have limited it because we weren't able to like analyze it from all over the country. We couldn't like spot the entire areas. तो हमने Quaid-i-Azam University specific करके यूनिवर्सिटी के एरिया को यूनिवर्सिटी के स्ट्रक्चर को की लाइब्रेरी, द डिपार्टमेंट एंड इसमें एक्चुअली हमने क्या डिस्कस किया है, हमने कंजर्वेशन है कि अगर हम बायोडाइवर्सिटी को कंसर्व करेंगे तो हमारे इंडस्ट्रीज
team of So on this day, we are very thankful to our faculty, Department of Plant Sciences, all the faculty members and all the students, especially the BS students, MPhil students and the PhD students. They play a very important role for making these models, awareness posters. So we are also thankful to the PAC, that is a Planetarian Association of the Quaid-i-Azam University, which is the only association of plant sciences in this country to aware the people that the plants are our life.